हाँ बेटा ठीक है, जल्दी से जल्दी कर लेते हैं बेटा, जो बेसिक बेसिक रिक्वायरमेंट होते हैं वो कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग थोड़ा न्यूमेरिकल्स को चले जाते हैं। ठीक है, चलो फर्स्ट वन देखिए बेटा, फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर प्रेशर निकालने का तरीका। एवरेज प्रेशर इज इक्वल्स टू योर, निकालते हैं कैसे बेटा, फोर्स डिवाइडेड बाय योर एरिया, फोर्स बाय योर एरिया, isn't it? और df by your da भी लिख सकते हैं अपन, df divided by da, अगर वो ज्यादा छोटा है तो you can use the differentiation for that. इसके यूनिट याद है किसी को बेटा? What is the unit for this one? Newton per meter square बोलो, या it is also equal to your 1 Newton per meter square will be equal to your 1 Pascal. And 1 bar is equal to how much beta? 1 bar is also unit of your atmospheric pressure, that is equals to 10 to the power of 5 Newton per meter square. So 1 Newton per meter square is equals to how much for your 1 Pascal. 1 bar is equals to 10 to the power of 5. And variation of the pressure with respect to height का formula क्या होता है बेटा, याद है? P is equals to your H rho into G. जैसे जैसे height बढ़ेगी वैसे वैसे pressure भी बढ़ते चले जाएंगे. H is the depth from the point of free surface. ठीक है ना, बेसिक फॉर्मूला है. 1 atmospheric pressure कितना होता है बेटा, याद है किसी को? 1 atmospheric pressure, 1 atmospheric pressure is equals to your 76 centimeter of mercury height. ठीक है ना, that is almost all equal to some around 10.3 meter of water column और water height बोल सकते हैं बेसिकली. ठीक है ना, yeah, that is almost all equal to your 1.013 into 10 to the power of 5 Newton per meter square, या approximately 10 to the power of 5 लिख सकते हैं बेसिकली. ठीक है ना, और एक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है इसके अंदर, गेज प्रेशर. गेज प्रेशर निकालने का तरीका बेटा, P of your gauge pressure is equals to your absolute pressure minus your atmospheric pressure. ठीक है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन. Manometer is used to measure the gauge pressure बेटा. What is an instrument which measures the gauge pressure? मतलब manometer by deflation. इसके अंदर अपने को ये प्रेशर डिफरेंस जो होता है ना, बेसिकली गेज प्रेशर विल बी इक्वल टू योर H rho into your G, standard formula. Absolute pressure minus atmospheric pressure is known as of your gauge pressure, or H rho G will also be called as of your this relation. और उसके बाद आता है एक छोटा सा एप्लीकेशन इन द फ्लूइड मैकेनिक्स, दैट इज योर आर्किमिडीज प्रिंसिपल. आर्किमिडीज प्रिंसिपल याद है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल बायोन फोर्स वगैरह कॉन्सेप्ट होता है. बायोन फोर्स नथिंग बट फोर्स व्हिच इज बीन इमर्स्ड on an immersed body. Buoyant force on an immersed body is given by the formula V into rho into G. V is volume immersed in the water, rho is the density of the liquid into your acceleration due to gravity. Very important formula beta. Apparent weight of the body कैसे निकालते हैं याद है? Apparent weight will be equal to your actual weight of the body minus of your buoyant force कर दो. Actual weight of the body minus of your buoyant force कर दो, that will give me the answer. फॉर्मूला याद होगा तो अपने को apparent weight का, apparent weight is represented by W dash will be equal to your W into your 1 minus of your rho divided by sigma. Clear बेटा? चलिए next one. Condition for floating. For floating of your any body. For floating of your any body. Condition क्या होना चाहिए बेटा? Weight of the body must be equal to buoyant force. उतना ही ना, weight of your body is equals to your buoyant force on the body. Buoyant force on the body. Clear है? Weight of your body will be equal to buoyant force on your body. And next one, very very important बेटा, मान के चलो if V and V dash are the submerged, मान के चलो V dash is submerged ले लेते हैं. तो मैं इसको यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको निकाल देके यहाँ पर लिख देता हूँ. If V dash and V are your submerged and total volume, V is your total volume. V is your total volume of body. तो इन दोनों के बीच एक ब्यूटीफुल रिलेशन होता है.
V dash divided by V will be equal to sigma divided by rho. ठीक है, is that clear? हाँ चलो, so ये very important relation for doing the numericals बेटा. apparent weight का भी फॉर्मूला रेगुलर क्वेश्चन फॉर्मूले बेस्ड आ गया तो डायरेक्ट लिखना. बायोंड वेट का डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाता है. एंड P is equal to H rho G, गेज प्रेशर का फॉर्मूला एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और H rho G is also your pressure. 1 bar is equal to this much, और atmospheric pressure is this much, और मीटर्स में दे रखा है तो 10 ले लीजिए. अगर सेंटीमीटर्स में दे रखा है तो 76 सेंटीमीटर ऑफ mercury will be equal to 1 atmospheric pressure. So pressure will be equal to force by area. ये बेसिक वाले क्वेश्चन है. और apparent weight निकालने का तरीका, apparent weight is equals to weight minus of your bound force कर दो, that will give me the answer. ठीक है, फ्लोटिंग के लिए कंडीशन क्या है, weight of your body must be equal to your apparent weight. एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है और एक मैंने आप लोग ऑलरेडी क्लास में पढ़ाया ही था, एक्सेलरेटिंग ऑफ योर लिक्विड के रिलेशंस. एक्सेलरेटिंग लिक्विड लिफ्ट में जब ऊपर नीचे जा रहा है, हॉरिजॉन्टल जा रहा है, जैसा आप न्यूटन्स लॉस में पढ़ते हो ना, वैसे वाला ही कंडीशंस बेसिकली. ठीक है ना. अब देखो बेटा, अगर वर्टिकल में जा रहा है, like pressure difference between any two points in the vertical height when it is accelerating in the upward direction. So if I am talking about your accelerating upwards, so pressure difference formula कैसे निकालोगे, P2 minus P1 will be equal to your rho into your G plus of your A into your H. Very important formula bit. Delta P is equals to rho into your G plus of your H. And bound force will be equal to how much in this case, better? Bound force will be equal to your V rho into your G plus of your A. Accelerating liquid in the upward force पे ये हो जाएगा. When it is moving in horizontal direction, isn't it? Horizontal acceleration. अगर horizontal acceleration है तो उस कंडीशन में एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, tan theta is equals to your A by your G, or else theta is equals to your tan inverse of your A divided by G, angle made by the liquid. तो मान के चलो ऐसा था लिक्विड कॉलम, मैंने आप लोग को लास्ट टाइम भी बताया था, अगर हॉरिजॉन्टल पे जा रही है तो लिक्विड का सरफेस ऐसा कुछ बन जाएगा बस. ठीक है ना. विद ये हॉरिजॉन्टल ये एक एंगल बनाएगी, दैट इज योर थीटा, यानी यहाँ पर भी इसके साथ ये बन जाएगा थीटा. इट इज मूविंग इन द फ्रंट डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन, इस पे सूडो फोर्स वगैरह लगेगा, दैट इज द बेसिक कंडीशन. ठीक है ना. अगर लिक्विड रोटेट करता है, जैसा बकेट में अपन पानी डाल के रोटेट करते हैं बेसिकली, तो ऐसे वाले कंडीशंस में ये वाला चमगे लिक्विड है, तो इसमें लिक्विड ऐसा हॉरिजॉन्टल पार्ट में होगा, तो ये इसका वर्टिकल एक्सेस होगा. And if it is moving with angular velocity omega, what is the liquid is been dropped, this one is your height of your H. तो इसके अंदर यहाँ से यहाँ तक हो गया height. तो difference in the level of the liquid. So when liquid has been rotating, यहाँ पर जो height of the liquid raised हुई है ना, so this height of the liquid which has been raised from this surface, इसको हम लोग निकालने का तरीका लिखते हैं, y is equals to your omega square into your x square divided by your 2 times of g. यानी यहाँ पर मैं लिखता हूँ, देखिए ये मान के चलो y है और ये मान के चलो x है. ठीक है ना. तो y वैल्यू विल बी इक्वल टू योर हाउ मच, x y वैल्यू इज इक्वल्स टू योर ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g. अगर लिक्विड को हम लोग सब्जेक्टेड टू हॉरिजॉन्टल रोटेशन करते हैं, तो डिफरेंस इन द एलिवेशन जो आएगा बिटवीन द एक्सिस एंड द डिस्टेंस ऑफ योर x, सेंटर से जो डिस्टेंस का डिफरेंस आएगा, दैट डिफरेंस इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला y इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इनटू x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g. ठीक है. चलिए थोड़े शॉर्टकट्स जो अपने को यूज होते हैं फॉर डूइंग न्यूमेरिकल्स. फर्स्ट वाला रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला याद होगा आप लोग को. रिलेटिव डेंसिटी विल बी इक्वल टू, याद है बेटा, density of substance divided by density of your water. Yeah, that will be equal to your weight in your air divided by weight in your air minus weight in your water. Very famous formula. So density of substance divided by density of liquid will also be equal to, अगर हम लोग liquid के लिए लिख रहे हैं
So density of your substance divided by density of any liquid, that will be equal to your weight in your air divided by weight in your air minus weight in your liquid. जो भी liquid ले रहे हो ना वो liquid ले लीजिए. That will give me the answer. Clear है बेटा? Is it clear? चलो एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा इस पे सिर्फ यही कंडीशन पे. मान के चलो मेरे पास एक क्वेश्चन है. A body weighs 250 Newton in air, 250 Newton in air, comma 200 Newton in water and 150 Newton in liquid. डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला लगा सकते हो ऊपर वाले का. अगर मैं पूछ रहा हूं फाइंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड, फाइंड density of liquid, find the density of liquid in the bracket density of water is equals to 1000 kg per meter cube. चलो करके बताइए. A body is weighing 250 Newton in your air. तो मैं लिख सकता हूँ density of your substance मतलब density of body divided by density of water will be equal to your weight in your air divided by weight in your air minus weight in your water. तो ये कितना है मेरे पास weight in air 250 divided by, तो ये बन गया मेरे पास 250 minus 200, यानी this will be equal to your 250 divided by 50, यानी 50 ones are 5 5s are, यानी ये हो गया मेरे पास 5. So density of your body is equals to 5 times the density of water. So it is your 5. Density of water कितना है बेटा? 1000 दे रखा है. So that will come out for your 5000 kg per meter cube. तो अब यहाँ पर मैं density of body divided by density of liquid लिखूं. That will be equal to your 250 divided by 250 minus ये कितना दे रखा है? 150 in the problem. तो ये बन गया मेरे पास कितना 250 डिवाइडेड बाई योर, ये बन गया मेरे पास 100, ये वाला चले गया. दिस विल बी इक्वल टू 2.5. तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड बना कितना बेटा? डेंसिटी ऑफ द बॉडी कितना है मेरे पास 5000. तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड विल बी इक्वल टू योर डेंसिटी ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाई 2.5, यानी दिस विल बी इक्वल टू 5000 डिवाइडेड बाई 2.5, isn't it? So that will be equal to your 2000 kg per meter. पता है ना? क्लियर है? स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बेटा. और एक क्वेश्चन देख लीजिए. A body floats in a liquid with 1/4 the volume, with 1/4 the volume out of liquid. ठीक है? The same body floats in water with its 1/3 volume out of water. Find density of liquid. Find density of liquid. एक बार ट्राई करिए. The body is floating in the liquid with 1/4 of its volume outside the liquid. यानी density of the body is equals to 1/4 अगर water में outside है तो 3/4 will be in the liquid. ठीक है ना? And given in the problem क्या है? Density of your body will be equal to how much for me बेटा? 2 times of density of water divided by 3. 1/3 is out of the water. ये 1/4 था. तो ये हो जाएगा 2/3, यानी this one is 2000 divided by 3.
kg per meter. Keeping the density of water is nothing but 1000. So density of liquid कितना बन गया बेटा? So density of your liquid will become how much for me? Density of the body is 2000 divided by 3. That is equals to 3 by 4 into density of liquid. So density of liquid कितना बन गया बेटा? Density of liquid is equals to 4 by 3 into your density of your body. Density of body कितनी थी? 2000 divided by 3. ये हो गया ऐसा, उल्टा हो जाएगा. So this will become for me how much beta? So is 8. This is 3 is a 9. So it is your 8000 divided by 9. So that is approximately 889 kg per meter. ठीक है? ये वाला ऊपर वाला क्वेश्चन देख लीजिए बेटा. Body weighs 250 Newton in air, 200 Newton in water, and 150 Newton in liquid. Find the density of the liquid पूछ रहा है. So I'm using the standard formula, एक वाला, and another formula for your liquid. दोनों को सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा. ठीक है? चलो. Next question. A metal weighs 20 gram in air. 20 gram in air and 12 gram in water. 12 gram in your water. If relative density of metal, if relative density of metal is 5, find volume of cavity. Find volume of cavity inside metal. चलो करके बताइए. ये देखिए कुछ बॉडी है और इसके अंदर एक मेटल है इस तरह से कैविटी के साथ, एंड बाकी का पूरा तो इससे कुछ कैविटी होती है. और इसके अंदर एक कैविटी है. ट्राई करिए. Metal weighs 20 gram in air and 12 gram in water. If relative density of metal is 5, find the volume of the cavity inside your metal. Volume of metal कितना है देखिए बेटा. Volume of your metal is equals to mass by density. Mass is equals to 20 divided by 5. That will be equal to 4 centimeter cube. ठीक है ना? Then what will be the loss in weight बेटा? Loss in weight. Loss in weight. That will be equal to V plus V dash into density of water into G will be equal to 20 minus of 12 into your G. Isn't it? यानी V plus V dash will be equal to your 8 Ag और Ag चला गया. Density of water I am taking it as of your 1. Density of water is equals to 1 gram per centimeter cube. Grams में अगर दे रखा है तो. So V plus V dash is equals to your 8. तो V dash की वैल्यू कितनी होगी बेटा?
एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मेटल कितना है 4, so it is 4 plus v dash is equals to 8, so v dash will be equal to 4 centimeter. बस इतना ही will be the answer ऐसे वाले क्वेश्चंस के लिए। क्लियर है? चलिए फ्लूइड मैकेनिक्स में और थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट्स आते हैं बेटा, दैट इज अबाउट योर बर्नौलीज थ्योरम के एप्लीकेशंस वगैरह याद होंगे तो आप लोग को। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट योर फ्लूइड डायनामिक्स के फॉर्मूलेस, फ्लूइड डायनामिक्स के फॉर्मूले, फर्स्ट वन इज नथिंग बट ऑफ योर रेट ऑफ फ्लो का फॉर्मूला याद है आप लोग को, रेट ऑफ फ्लो या डिस्चार्ज बोलो, Q is equals to your A into your V. Second one is your Reynolds number. Reynolds number is equals to rho into V into D divided by neta. ठीक है, ये रिलेशन याद है आप लोग को। अगर Reynolds number is lesser than or equal to 2000, flow is laminar, isn't it? अगर Reynolds number की वैल्यू greater than 3000 है, then the flow will be your turbulent, isn't it? अगर RE की वैल्यू RE lies between 2000 and 3000, isn't it? Flow is your unstable or critical बोल सकते हैं। The next one is again very important formula, equation of continuity. Equation of your continuity. याद है equation of continuity? A1 V1 will be equal to your A2 V2. That means A1 V1 will be equal to A2 V2. A is area, V is your velocity, isn't it? Area को radius में लिख सकते हैं बेटा, area is equals to pi into your r square लिख सकते हैं, या diameter is 2 times of r हो गया तो r is equals to d by 2 लिख सकता हूँ। So this will be equal to pi into your d square divided by 4 ऐसा भी लिख सकता हूँ, isn't it? तो ऐसे वाले conditions में अपने को formulas याद रखना है। The next one and very important is your Bernoulli's theorem. Bernoulli's theorem और मान सकते बोल सकते हैं Bernoulli's equation. Very important, regularly problems पूछे जाते हैं। Pressure energy plus kinetic energy plus of your pressure potential energy for unit volume is always remaining for me constant. That is nothing but of your P plus half into rho into V square plus rho G into your H will be equal to your constant. इसमें और एक फॉर्म भी है बेटा इसके अंदर ही, that is a P by your rho G plus of your V square by your 2G plus of your H will be equal to your constant. ठीक है, basic standard formulas. Next one is your velocity of efflux. Velocity of your efflux. यानी कोई कंटेनर में इसमें से छोटा सा अगर होल दे तो वेलोसिटी ऑफ लिक्विड बाय व्हिच इट इज बीइंग गोइंग आउटसाइड, जैसा मान के चलो एक कंटेनर है, यहाँ पर एक छोटा सा होल है, कहीं पर भी है बेसिकली, तो मान के चलो यहाँ पर कहीं पर होल लिया मैंने और इसमें लिक्विड भरा हुआ है अप टू सर्टेन हाइट। So velocity with which the liquid is going out of this orifice is called as of your velocity of efflux. यहाँ से यहाँ तक मान के चलो ये हाइट h है, ये जो लिक्विड बाहर आ रही है ना v is equals to अंडर रूट ऑफ योर 2g into h से आएगी। अगर टोटल हाइट ऑफ द लिक्विड मैंने कैपिटल h ले रखा है तो यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना हो जाएगा बेटा, कैपिटल h माइनस ऑफ योर स्मॉल h हो जाएगी, और ये ऐसा जाके यहाँ पर कहीं पर गिरेगा तो ये हो गया इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, दैट इज नथिंग बट x। तो वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स का फॉर्मूला हो गया अंडर रूट ऑफ योर 2g into your h, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू योर, ये जहाँ पर गिर रहा है दैट विल बी इक्वल टू योर वेलोसिटी इनटू टाइम, यानी 2 into your अंडर रूट ऑफ योर स्मॉल h into your कैपिटल h माइनस ऑफ स्मॉल h। और फॉर कंडीशन देखो बेटा यहाँ पर, फॉर मैक्सिमम h, for maximum x, h must be equal to half of the liquid column, and x max will be equal to at that time equal to your height of the container. ये फॉर्मूला इतना याद रख लो काफी है। Now time taken to empty the vessel, time taken to empty the vessel, time taken to empty the vessel,
time taken to empty the vessel. T will be equal to your capital A into your root 2 divided by your A into your root G into your root of your H1 minus root of your H2. Very famous formula beta. याद रखना जरूरी है. T is directly proportional to your root of your H1 minus of your H2. क्लियर है? उसके बाद टॉर्सनलिस थ्योरम के थोड़े फॉर्मूले से, डायनामिक लिफ्ट के थोड़े फॉर्मूले से, तो पूरे डेराइव्ड फॉर्मूले से वो आप लोग को एक बार कंपलसरी याद रखना है बेटा. आई कांट राइट नाउ राइट ऑल दैट फॉर्मूलेस व्हिच हैव बीन एप्लीकेबल. एक छोटा सा फॉर्मूला लिख देता हूं मैं लास्ट में बेसिकली, दैट इज अबाउट योर डायनामिक लिफ्ट. डायनामिक लिफ्ट या और एक नाम क्या है इसका? एरोप्लेन विंग. एरोप्लेन विंग फॉर्मूला भी बोल सकते हैं या लिफ्ट फोर्स भी बोल लीजिए. याद है फॉर्मूला इसका? F is equals to pressure difference, that is your P2 minus P1 into your area of cross section A. ये इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, half into density of your air into your V1 square minus of your V2 square into area of your cross section. ये हो गया फोर्स. डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम आता है बेटा इसके अंदर. V1 V2 आर दी वेलोसिटीज बेटा. मान के चलो अगर विंग आपका ऐसा कुछ है बेसिकली, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी लोअर सरफेस पे वो हो जाएगी v2. अपर सरफेस पे जो वेलोसिटी हो जाएगी दैट विल बी इक्वल टू v1. दिस इज द हाइट ऑफ दिस वन h. ठीक है, याद है? इक्वेशन ऑफ योर कंटिन्यूटी. कितने इसमें याद रखना है फ्लूइड डायनामिक्स में? सरफेस टेंशन के तो फॉर्मूलेस वैसे तो आप लोग को आते ही होंगे, और उसके बाद विस्कोसिटी के थोड़े बहुत छोटे मोटे फॉर्मूले से वो भी आप लोग को याद रखना है. फिर भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखो विस्कोसिटी. पीवाईक्यूज कर लो बेटा आराम से जल्द हो जाएगा. एक वेरी फेमस फॉर्मूला होता है विस्कोसिटी का बेटा. देखो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड विल डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. यानी जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ना बेटा, विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड विल डिक्रीज, whereas viscosity of the gases will increase with increase in temperature. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, आपने को याद रखना है. What is the viscosity? Resistance force between any layers of the fluid is called as of your viscosity. तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ viscosity of liquid. Viscosity of liquids decreases with increase in temperature. With increase in temperature. और उसी तरह से viscosity of gases जो होता है ना बेटा, viscosity of your gases increases with your increase in temperature. ये ऑलरेडी पूछ चुका है, उसलिए लिख रहा हूं मैं बेसिकली. एंड थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, विस्कस फोर्स का फॉर्मूला Fe is equals to neta into A into your dV divided by your dy r dx. डिपेंड करता है जैसा ले रहे हैं वैसा. ठीक है. And another very famous important formula is about your Stokes law. याद है Stokes law formula? Viscous force will be equal to your 6 pi neta r into your v. ठीक है. R is the radius of the spherical ball, applicable only for the spherical ball. This formula is applicable only for your spherical ball. And this is the viscous force between any two layers of the liquid. Neta into area of cross section into your velocity gradient. Anything divided by length is known as what beta? Velocity gradient. और उसके बाद होता है टर्मिनल वेलोसिटी का एक फेमस फॉर्मूला. मैंने क्लास में बहुत ज्यादा डिटेल में करवाया था. ये टर्मिनल वेलोसिटी के बहुत सारे एप्लीकेशंस भी लिखवाए थे डिफरेंट केसेस के लिए, काइनेटिक एनर्जी वगैरह. को एक बार गियोथ्री कर लीजिए बेटा. टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 2/9 into your r square into your sigma minus of rho into your g divided by your neta. ठीक है. And next one is your Poissonis equation. और मान के चलो Poissonis theorem, जैसा आपको समझ में. Poissonis equation या Poissonis theorem. याद है फॉर्मूला? Q is equals to your pi pressure difference P1 minus of your P2 into your r to the power of 4 divided by 8 neta into your L. याद है? Rate of flow of viscous liquid any in a circular pipe is given by this relation beta. Q is equals to your
ये पूरा जो लिखते हैं ना बेटा हम लोग यहाँ पर डेल्टा पी डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 8 नीटा इंटू एल डिवाइडेड बाई पाई आर टू द पावर ऑफ 4. दिस विल बी रिप्रेजेंटेड बाई डेल्टा पी डिवाइडेड बाई रेसिस्टेंस. यानी आर की वैल्यू जो हो जाएगी दैट विल बी इक्वल टू योर 8 नीटा इंटू एल डिवाइडेड बाई पाई आर टू द पावर ऑफ 4. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. ओके, when pipes are connected in series combination, देखो ऐसा कॉम्बिनेशन है, एक पाइप और उसके साथ और एक पाइप है. ओके, अगर दे आर इन द सीरीज कॉम्बिनेशन, रेसिस्टेंस इसमें कैसे लिखोगे बेटा? R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2. ये फॉर्मूला इसमें से लिख लीजिए, दैट विल गिव मी द आंसर फॉर दैट. ठीक है ना, दिस इज इन योर सीरीज कॉम्बिनेशन. पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए पाइप्स एक के ऊपर होते हैं, एक ऐसा कुछ, isn't it? So what will be the same बेटा? यहाँ से जो लिक्विड निकल रहा है Q1, यहाँ से Q2, यानी इसके अंदर कैसे लिखोगे? 1 by R will be equal to 1 by R1 plus 1 by R2, isn't it? And total rate of flow इसमें क्या बनेगा? Q is equals to Q1 plus Q2 बनेगा, क्योंकि यहाँ से जो लिक्विड जाएगा Q1, यहाँ से जो लिक्विड जाएगा Q2, दोनों मिलके बाहर निकलेंगे, that is nothing but Q. So Q value will be equal to Q1 plus Q2 participation. Whereas in the series combination में जितना enter हो रहा है उतना बाहर निकलेगा. So Q1 will be equal to your Q2, that is nothing but Q. That will be equal to pressure difference, that is a P1 minus a P2 divided by R कर लो. That will give me the rate of flow. You will give me what for me? Rate of flow. Rate of flow in your series combination. हाँ, उसी तरह से करना है, ज्यादा कुछ नहीं. ठीक है ना. तो ये छोटे मोटे फॉर्मुलेस थे जो आपने को याद रखने थे for doing the numericals related to your different cases. इसके बाद थोड़े न्यूमेरिकल्स देख लेता हूँ जल्दी से, see whether we can do it or not. ये तो बेसिक वाला क्वेश्चन है. फर्स्ट वाला देखिए बेटा, if a pressure P is your at a half the depth, if pressure at half the depth of the lake is equal to 2 by 3 times of the pressure at the bottom of the lake, then what is the depth of your lake? कोई बताएगा? Can anyone do this problem? Anyone? Pressure at half the depth of the lake is equals to 2 by 3 times the pressure at the bottom. Pressure at half the depth. Pressure at the bottom of the lake क्या होता है बेटा? Pressure at half the depth मतलब कितना? P is equals to P naught हो गया atmospheric pressure at half the depth मतलब H by 2 rho into your G, isn't it? Is equals to your 2 by 3 times of the pressure at the bottom, yani P dash will be equal to your, this will be your P naught plus of your, this will be equal to how much for me? Atmospheric pressure हो जाएगा, that is nothing but equal to 2 by 3 times of your atmospheric pressure, यानी ये हो जाएगा P naught, तो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर ऐसा, just let me write out right now. Stuck हो रहा है. P dash is equals to 2 by 3 times of your P naught plus of your H rho into G. And in दोनों की equate कर लो, P is equals to your P dash. And this one is P naught plus H by 2 rho into your G will be equal to 2 by 3 times of P naught plus 2 by 3 times of H rho into G. ठीक है ना? तो ये कितना बन जाएगा बेटा? 1 by 3 times of your P naught. 1 by 3 स्ट्रक हो रहा बेटा ये. हाँ, so पूरे P naught टर्म्स एक जगह ले लीजिए. This will become for me P naught divided by 3 is equals to 1 by 6 times of your H rho into your G. तो H की वैल्यू कितनी हो गई? H is equals to your 2 times of your P naught. P1 3 2 divided by your rho into your G. That is 2. Atmospheric pressure is 10 to the power of 5 divided by 2. Density of the water will be equal to 10 power 3. G की वैल्यू भी हो गई 10. So इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए. That will be coming out for me 20 meters.
ठीक है, नेक्स्ट वन. The siphon is used to demonstrate in the following figure. The density of the liquid flowing in the siphon is 1.5 gram per cc. The pressure difference between the point P and S will be equal to how much? P and S देखो बेटा दोनों are open to the atmosphere pressure, isn't it? Both the points are at the surface of the liquid and this point are in the same open atmosphere. So both the points will possess the similar pressures बेटा and it is equal to how much? 1 atmospheric pressure P and S के लिए both of them. तो इन दोनों का pressure difference कितना हो जाएगा? 0. Direct question. ये तो स्ट्रक हो रहा है, अभी तो करना मुश्किल है. ओके, फॉर्मूले से रिवाइज कर दिया, एक बार देख लीजिए बेटा और थोड़े पीवाईक्यूज निकाल के कर लीजिए. ठीक है, चलो टेक केयर बेटा, बाय.